Hello dear students, after solving example 10.2 in the previous lecture, today we will continue with example 10.3. So first of all, let us understand the question. An object is thrown vertically upwards and it rises to a height of 10 मीटर. यानी कि जब किसी ऑब्जेक्ट को हमने अपर डायरेक्शन में उछाला तो दैट ऑब्जेक्ट reaches to a maximum height of 10 meters, and then after that it will come down and fall on the surface of the earth. What we need to calculate? We need to calculate two things over here. First, calculate the velocity with which the object was thrown upwards. Now this velocity will be the initial velocity, the velocity with which the object is thrown upward. यानी कि जिस किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम ऊपर की तरफ उछालेंगे तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी हमको यहाँ पे फाइंड करनी है, द वेलोसिटी विथ विच वी आर थ्रोइंग दैट ऑब्जेक्ट. बट व्हेन इट विल कम डाउन एंड रीच द सरफेस ऑफ द अर्थ, इट्स फाइनल वेलोसिटी वी विल बी जीरो, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट अर्थ पे आ जाएगा देन इट्स मोशन विल स्टॉप. सो हियर वी हैव टू फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी, दैट इज वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ u, बट द वैल्यू ऑफ फाइनल वेलोसिटी v शुड बी टेकन जीरो. क्यों? क्योंकि जब ऑब्जेक्ट अपना मोशन हाईएस्ट हाइट पे पहुंच के कंप्लीट करके नीचे आएगा एंड व्हेन इट विल फॉल ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ देन इट्स मोशन विल स्टॉप एंड सो इट्स फाइनल वेलोसिटी v विल बिकम जीरो. सो इन द फर्स्ट पार्ट आई नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ इनिशियल वेलोसिटी u. द सेकंड थिंग आई नीड टू फाइंड इज द टाइम टेकन बाय ऑब्जेक्ट टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट, दैट इज 10 मीटर. यानी कि जब मैंने ऑब्जेक्ट को अपर डायरेक्शन में थ्रो किया, इट रीचेस एट द हाइट ऑफ 10 मीटर, बट आई नीड टू फाइंड द टाइम that will be taken by the object to attain the height of 10 meter, which is the highest point. So in short, in this particular question we need to find two values, that is the value of initial velocity u and second the time taken, that is t. So first of all let us write what data we have already in the question. Okay, so now an object is thrown vertically upwards and rises to a height of 10 meter, yani distance traveled by object which is denoted by s will be equal to 10 meters. Okay, now as I said, this object की final velocity v will be 0 meter per second. Okay, two things that we need to find over here is the value of initial velocity u and time taken t. तो सबसे पहले let us try to find the value of u. Okay, so we have one formula, v square minus u square is equal to 2as. Now as this chapter is related to gravity, okay, instead of acceleration a we generally take the value as small g, that is acceleration due to gravity. Okay, so instead of a I can take g. Now in this question value of g is not given. जब हमने previous question solve किया था, that is example 10.1, in that question the value of g was given 10 meter per second square to make the question easy and simpler. उस वक्त भी मैंने आपको बताया था कि अगर आपके क्वेश्चन में g की वैल्यू नहीं दी हुई है तो the accepted value is 9.8 meter per second square. Now here the object is thrown upwards, यानी कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसकी मोशन it is in against the direction of gravity, it goes against the gravity. So as the motion is against gravity, the value of g, that is acceleration due to gravity, should be taken minus 9.8 meter per second square. ये मैंने आपको previously भी समझाया था कि when an object is making motion towards the surface of the earth, in that case the value of gravitation is positive. Why? Because the object is traveling towards the gravitational force. But in our case, in this sum, the object is thrown vertically upwards. तो जब ऑब्जेक्ट वर्टिकली अपवर्ड मूव हो रहा है तब उसमें जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है. तो जब दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट होती है तो हम g की वैल्यू को लेंगे नेगेटिव. सो आई विल टेक द वैल्यू ऑफ g as -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. सो नाउ लेट अस पुट द वैल्यूज. तो ये जो हमारा v है वो तो 0 है, तो 0 का स्क्वायर तो 0 ही रहेगा. ठीक है, सो देयरफॉर आई हैव माइनस u स्क्वायर
is equal to 2 into minus 9.8 into the value of s is 10. Okay, so therefore minus u square is equal to 9.82 is 19.6 into 10 will be equal to minus 196. So minus u square is equal to minus 196. That means plus u square is equal to 196. Therefore value of u is 14 मीटर पर सेकंड. जब 196 का हम स्क्वायर रूट लेंगे तो हमको मिलेगा 14. So the first part has been solved. First part में हमको क्या फाइंड करना था? I needed to find the velocity with which the object was thrown upwards. So you can say that the object was thrown upwards with initial velocity of 14 मीटर पर सेकंड. अब दूसरा मुझे क्या फाइंड करना है? The time taken. ओके, तो यहाँ पे हमारे पास v u की वैल्यू है, g की भी वैल्यू है. You can use any formula. Okay, suppose I use this formula that acceleration a is equal to v minus u upon t. So therefore t, time taken t, is v minus u upon a. So now what is value of v? The value of v is 14. Okay, minus u, that is initial velocity v is 0 minus value of u we just found out is 14 upon a is minus 9.8. So this is minus 14 upon minus 9.8. तो दोनों जगह से माइनस माइनस कट हो जाएगा. So this will come 14 upon 9.8. So when you calculate it roughly in decimal you will get 1.43 seconds. That is the time taken by object to reach the maximum height will be 1.43 seconds. Now let me explain you the sum once again. यहाँ पे हमको क्या दिया है? एक ऑब्जेक्ट को हम वर्टिकली अपर डायरेक्शन में थ्रो कर रहे हैं. इट reaches up to height of 10 meter. We need to find two things. That is the velocity with which the object was thrown upwards, and second the time taken by object to reach the highest point. Okay, तो यहाँ पे जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो कब कहाँ तक ऊपर जाता है? It goes up to the height of 10 meter. यानी distance traveled by object which is denoted by s will be equal to 10 meter. Okay, initial velocity u की वैल्यू हमको फाइंड करनी है. जब ऑब्जेक्ट ऊपर मोशन करेगा 10 मीटर तक, फिर वहां से वो नीचे आएगा और जब वो अर्थ पे स्ट्राइक करेगा तो उसका मोशन स्टॉप हो जाएगा. दैट मींस फाइनल वेलोसिटी v will be 0 मीटर पर सेकंड. We need to find the time taken by the object, that is t is equal to question mark. सबसे पहले हमने u को फाइंड करने के लिए कौन सी फॉर्मूला यूज की? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2gs. v की तो वैल्यू 0 है तो 0 माइनस u स्क्वायर दैट इज माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इनटू g. हमने नेगेटिव इसलिए लिया बिकॉज़ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ऑपोजिट टू द ग्रेविटेशनल फोर्स. सो इनटू 9 minus 9.8 into 10. So by multiplying these values I got minus u square is equal to minus 196. That means u square is equal to 196. Then I took a square root. Value of u is 14 meter per second. That means I got the part of my first question. That is the velocity with which the object is thrown upward is 14 meter per second. फिर मुझे फाइंड करना है टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू अटेन दैट हाईएस्ट पॉइंट. हमारे पास एक्सेलरेशन की फॉर्मूला कौन सी है? a is equal to v minus u upon t. तो मैंने दोनों को एक्सचेंज किया, t को ऊपर लेके गए, a को नीचे लेके आए, तो t is equal to v minus u upon a. Now we know that final velocity v is 0 minus u की वैल्यू हमने फाइंड की 14 मीटर पर सेकंड अपॉन a. A is acceleration due to gravity. So instead of a you can also use g. Okay, so that is minus 9.8. Now 0 minus 14 is minus 14 upon minus 9.8. दोनों जगह से माइनस माइनस कट हो गया. So I have 14 upon 9.8, and when I carry out this division I will get answer 1.43 second. That means the time taken by the object to reach the highest point is 1.43 seconds.
Okay, so after solving certain examples, we will move on to the next topic. Next topic discuss about mass and weight of an object. Now generally what happens, we take mass and weight to be one and the same. कई जगह पे हम differentiate नहीं कर पाते, we say that mass and weight are the same thing, but actually mass and weight are totally two different things. And कई जगह पे तो हम मिस्टेक करते हैं कि जहाँ हमको मास मेंशन करना होता है वहाँ पे हम वेट मेंशन करते हैं, या तो वेट मेंशन करना होता है वहाँ पे हम मास मेंशन करते हैं. सो बेसिकली बिफोर अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू टर्म्स, लेट अस अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ दीस टू टर्म्स. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डिस्कस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मास. Mass of an object is the measure of its inertia. It represents the matter contained in an object. So the matter contained in an object is known as its mass. The value of mass is same everywhere. It does not change from place to place. यानी कि if I am an object, तो मेरे अंदर जो मैटर है that will remain the same whether I am in India, in USA, in Canada or on moon or on some other planet. The matter contained in my body remains the same. That means the value of mass remains same everywhere. Generally, the SI unit of mass is taken as kilogram. So when someone asks what is your weight and then you reply 40 kg, 50 kg, you are not answering your weight. You are representing your mass because mass is measured in kilogram. Now what is weight? Okay, so by definition, the weight of an object is the force with which it is attracted towards the earth. Once again, आपका जो weight है that is nothing but a kind of force with which the body is attracted towards the surface of the earth. अभी हमारे पास force की फॉर्मूला है, force is mass into acceleration. ये चैप्टर ग्रेविटेशन के रिलेटेड है, तो जहां पे भी एक्सेलरेशन a आता है you can take acceleration due to gravity that is represented by small g. So my formula became F is equal to mg. Now this force is nothing but weight of an object, so force F is replaced by W. So we got another formula that whenever you want to find out weight of any object, weight of the object is product of its mass and small g, that is acceleration due to gravity. यानी कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास है 100 किलोग्राम तो उसका वेट क्या होगा 100 into 9.8, that is 980. So in short, once again, what is the meaning of mass? Mass of an object is the measure of its inertia or is the measure of the matter contained in that object. It is generally measured in kilogram, as I said, right? But what is weight? The weight of an object is the force with which the object is attracted towards the surface of the earth. तो जो weight है, it's a kind of force. तो force की क्या formula है हमारे पास? Force is equal to mass into acceleration. So F is equal to m into a. We derived this equation in our previous chapter. In this chapter we are discussing about gravitational force. So here acceleration a is replaced by acceleration due to gravity, which is small g. तो मेरे पास formula है F is equal to mg. Now weight is equal to the force. So force is replaced by weight. तो हमारे पास किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट फाइंड करने की फॉर्मूला डिराइव हुई है, that is W is equal to m into g, where small m represents the mass of the object and small g represents the acceleration due to gravity, which is generally taken as 9.8 meter per second square. Now जब हम मास को डिस्कस कर रहे थे उस वक्त मैंने बोला कि SI यूनिट ऑफ मास, दैट इज मास इज जनरली मेजर्ड इन किलोग्राम. ओके, बट वेट इज मेजर्ड इन न्यूटन. तो जब कोई हमें वेट पूछता है तो हम कभी न्यूटन में आंसर नहीं देते. समझ में आया? दैट इज द मिस्टेक दैट वी मेक. ओके, सो मास इज मेजर्ड इन किलोग्राम whereas weight is measured in Newton, that is SI unit of weight is Newton. This quantity, that is weight, has both magnitude as well as direction. तो जिस क्वांटिटी में
ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, दैट इज इट्स मैग्नीट्यूड, दैट इज इट्स वैल्यू, as well its direction is known as a vector quantity. So weight is an vector quantity. And last and the most important thing is that the weight of any object is directly proportional to its mass. यानी कि जिस ऑब्जेक्ट का वेट जितना ज्यादा होगा उतना उसका मास भी ज्यादा होगा. क्यों? क्योंकि जो वेट है इट इज प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g. तो ये g की जो वैल्यू है वो तो ऑलमोस्ट एक पर्टिकुलर प्लेस पे कांस्टेंट रहेगी. तो जैसे जैसे w की वैल्यू बढ़ेगी m की वैल्यू भी ज्यादा होगी. सो वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास. इतनी चीजें हमको याद रखनी है. ठीक है. नाउ इन द नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस द डिफरेंसेस बिटवीन द टू टर्म्स दैट इज मास एंड वेट. जैसा कि हमने प्रीवियसली एक डिफरेंशिएशन किया था बिटवीन कैपिटल G एंड स्मॉल g. ओके. नाउ वी आर गोइंग टू डिफरेंशिएट between mass of an object and weight of an object. This is also important question for 2 marks. Okay, so dear students, let us study important question for 2 marks, that is differentiate between mass and weight. यहाँ पे मैंने आपको 5 पॉइंट दिए हुए हैं. अगर पॉसिबल हुआ तो मैं एक 6 पॉइंट में डिस्कस करूंगा, बट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से 2 मार्क क्वेश्चन 4 पॉइंट्स आर इनफ. सो इट्स अप टू यू दैट which 4 points you want to learn or write. Okay, so the first difference will be the definition itself. So what is the definition of mass? The quantity of matter in a body or in an object is called its mass. Okay, whereas for weight, what is weight? Weight is the force with which the body is attracted towards the center of the earth. यानी जो हमारा पहला डिफरेंस का पॉइंट है, in that we will write the definition of mass and the definition of weight. That will become our point number 1. Point number 2, mass of the body is constant. Now this is a very important point. Mass of the object or body is constant means it remains same everywhere. Its value does not change from place to place. जैसा कि मैंने आपको बताया कि मास क्या है, द मैटर कंटेंट इन माय बॉडी. ओके, सो इवन इफ आई एम इन इंडिया, इन ऑस्ट्रेलिया, इन यूएसए और ऑन द मून, माय मास विल रिमेन द सेम. व्हाई? बिकॉज मास इज ओनली द मैटर कंटेंट इन एन ऑब्जेक्ट, वेयरएज वेट ऑफ द बॉडी चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. यानी कि मैं अगर मेरा वेट मेजर करता हूं अर्थ पे by multiplying the mass of my body and the value of small g. Now when I reach the moon, you will learn in the next topic that the gravitation force on the moon is 1/6 the gravitational force on earth. यानी कि जब हम मून पे जाते हैं तो मून का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो अर्थ से बहुत ही कम होता है. So if the value of g is small, w is equal to m into g. यहाँ पे g की वैल्यू ग्रेटर है, मून पे जो g की वैल्यू है वो स्मॉलर है. तो मेरा वेट यहाँ पे और मेरा वेट मून पे दोनों जगह पे सेम नहीं होगा, क्योंकि W is m into g. Although m is same for me on the surface of the earth and on the moon, but the value of g is different on the earth and on the moon. As a result, the value of W is product of m into g will be also different. तो हमको याद क्या रखना है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी बॉडी का मास हमेशा कांस्टेंट रहता है, एवरीवेयर इट रिमेन्स द सेम वैल्यू एवरीवेयर, बट the value of weight of an object will change from place to place. That will be our point number 2. Now point number 3, the SI unit, यानी जो mass of the object है उसको हम जनरली मेजर करते हैं किलोग्राम. So SI unit is kilogram. Now SI unit of weight is Newton, means weight is generally measured in Newton. 4th point, it's a scalar quantity. उसमें डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं है, उसकी जो फाइनल वैल्यू होती है, okay, that is only important. But as we studied, weight is a vector quantity. तो हमारे 4 पॉइंट हो गए. 5th point, mass can be measured using a normal balance. बैलेंस यानी कि तराजू, जो नॉर्मल तराजू होता है उससे मास आप मेजर कर सकते हो, बट वेट में तो ग्रेविटी भी आनी चाहिए. सो इट कैन बी मेजर्ड ओनली यूजिंग द स्प्रिंग बैलेंस. सो रिमेंबर द 5th point, mass could be measured using any ordinary balance, okay, the normal balance. Whereas if
if you want to measure weight of an object, you require a spring balance. So हमारे 5 पॉइंट हो गए. The sixth point that you can also write is that mass of an object can never be zero. जो ऑब्जेक्ट होता है उसका मास कभी भी जीरो नहीं होता, बट वेट ऑन ऑब्जेक्ट कैन बी जीरो. किस तरह से? W is equal to m into g. अब मास 1 टन है, बट आई एम मेजरिंग दैट ऑब्जेक्ट इन सच अ प्लेस वेयर ग्रेविटी इज जीरो. हमको पता है कि जब हम आउटर स्पेस में चले जाते हैं तो वहां पे ग्रेविटी क्या हो जाती है? जीरो. सो W is equal to m into g. तो मास आपका 100 kg हो या 1000 kg हो, if you are at a place where the value of small g, that is acceleration due to gravity, is zero, then your weight will become zero. So the sixth point that you can write is that mass of an object can never be zero, but weight of object can be zero. So I have discussed 6 points for you. I say it again, for examination point of view, you need to learn only 4 points, but in your notebook you can write down all 6 points. So even if during examination you forget 1 or 2 points, you will get the full marks.